Hello everyone, starting today, we are kicking off a brand new journey, solving some of the most valuable CP sheets. So yeah, you're hearing right. We'll now start some solving a random sheets that are like जिनके reviews वगैरह अच्छे हैं, जो लोग अच्छा अच्छा मान रहे हैं इनको. We'll start the solving that whole sheets. Like I'll not cover the complete these questions of the every rating. Just picking the best questions और like जो थोड़ा देखेंगे अच्छे कि हाँ इनमें कुछ पैटर्न हिडन है, कुछ करने में सॉल्व हो सकता है, लाइक कुछ अच्छा मिल सकता है, सिर्फ वही प्रॉब्लम्स करेंगे. सो आई विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस दैट एक्चुअली मैटर्स only and beginner friendly problems and solid intermediate ones and even advanced challenges as we move forward, right? So we'll start with the CP-31 sheet by Priyansh Agrawal, and after this we'll explore other famous sheets as well. Okay, so the idea is simple: to learn step by step, improve pattern recognition, and get stronger for contest and interviews. Yes, all right. So yeah, without wasting any time, let's dive into it. अच्छा, एक क्वेश्चन था इनके अलावा जो लाइक मुझे किसी ने हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे भेजा था, और ये क्वेश्चन उसके लाइक रिसेंटली TCS के इंटरव्यू में पूछा है उससे. सो लाइक यही सेम क्वेश्चन था. सो एक आइडिया लगा सकते हैं कि लाइक TCS भी अब मतलब कोड फोर्सेस से क्वेश्चंस ले रही है. मार्केट थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गया, पर कोई ना, अच्छा ही है. क्वेश्चन ज़्यादा टफ टिपिकल है नहीं है, मैंने अभी पढ़ के देखा था. सो एक ये क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद CP-31 शीट स्टार्ट करेंगे. सो या लेट्स स्टार्ट डे 15. या सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. Hack is a word do not expressing as a crying. ठीक है. Imagine cases and the running rabbit is so cute. It's kind of anime, right? What are the ones who know in the this? Okay. Print a single design, brother trigger in the quack. Right. So yeah, let's start our first problem. String as an input. Come on. एक तो लैपटॉप का कीबोर्ड है ना, मेरे को थोड़ा सा कम, मैं उससे हैंड्स ऑन हूँ. मैंने नॉर्मल कीबोर्ड यूज़ किया है और यहाँ पे अभी डेस्क पे इतनी जगह है नहीं मैं अपना कीबोर्ड रख सकूँ. I'll just set up my desk in a few days. थोड़ा सा वीकेंड मिले तो फिर करेंगे कुछ. Alright, and the other one that we have just, I'll just use the brute force method, okay? So yeah, j is equal I plus 1 and then j is less than s dot size again plus j, and then again the third loop as it says k like you okay. So k is equal to j plus 1, k is less than s dot size of the shit of the size, and then plus k. Right, and there is a simple condition: if s of I is equal q, and if s of I, not s of I, it's s of j, if s of j is equal a, and again s of k is equal q. If it is, then we'll just answer plus plus. Right, and after this loop we'll just into the answer. Let's run. एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लाइक बहुत ब्रूट फोर्स मेथड की मैंने लगाया है इस पे, एंड ब्रूट फोर्स ही एकदम परफेक्टली वर्क किया है. सो द थिंग आई वांट टू से कि लाइक कंपनीज में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक कोड फोर्सेस से क्वेश्चन पिक कर रहे हैं. सो
इट्स गुड कि इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है, लाइक जो क्वेश्चंस मैं एक्चुअल में वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो किसी ने रिव्यू में कहीं डाले, एक्सपीरियंस में डाले, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डाले कि लाइक ऐसा क्वेश्चन पूछा था या फिर जो भी है। सो जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ सब साथ साथ वही फॉलो कर लो, तो भी एक बहुत बेनिफिट मिलेगा एक्चुअली। इट्स एक्सेप्टेड। लेट्स स्टार्ट द सीपी शीट नाउ। लेट्स सी। चलो आप स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, फिर आगे से देखेंगे। लेट्स सी द दिस क्वेश्चन। ओके, swap and delete a given binary string and this. Okay. This one is actually. So we can perform only two kind of operations, like delete one character from the string, and this operation cost one coin, right? And swap any pair of the character as, and this operation is free. और इसके साथ मेरा लैपटॉप का चार्ज भी हो गया फ्री। Let me connect. Okay. What was then continuous and constraints are all. So doesn't exceed 2 into 10 power 5 for the test case in this. Okay, so now you'll have to delete the character from the string to get an empty string, only then t become good. Okay, one deletion cost one coin, and this t same goes with this. If t1 already got t, so the one coin t. Yeah, I understand the question. Let's just be alright. And then the key is minus minus. We'll just open it. Right. Just write run, and then again first take this as string s, and then this input, and then vlen is equal to s dot length, right? And then I'll just pick this one. C0 is equal to 0, comma C1 is equal to 0, comma left, comma right. Then I'll just run a loop from I is equal to 0 and I is less than n plus plus I, and if my s of phi is equal 0, then I'll just increase the count, right? Else I'll just increase the C1's count, correct? Right. And after this loop I'll just again L is equal, लाइक क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में इनमें कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत है नहीं है, पढ़ नहीं रही। जो उसने एज इट इज़ बोला हुआ है, अगर आप तुमको बेसिक नॉलेज भी है ना डीएसए की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, नॉट ऑल द डीएसए, इसमें कहीं डीएसए यूज़ भी नहीं हो रहा, सिर्फ एसटीएल यूज़ होता है मैक्स। ठीक है, अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है ना प्रोग्रामिंग की, और लाइक कंडीशंस की, लूप्स की, और थोड़ा ड्राई रन करना अगर आपको आता है, यू कैन ईजिली अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। उसमें कहीं कुछ है ही नहीं, अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह हटा दूँ तो। Okay, so yeah, left is right. I'll just assign it to say 0, and then I'll just take condition if c of 0 is equal as an amount of c of 1, then I'll just c out 0 and what, and then right.
and in that condition I'll just return it. Sorry, return. And outside the loop I'll just run outside the if condition I'll just run a loop till the end, starting from the end. Not the n, it's n minus 1. It should be n minus 1, and I is greater than equal to 0, and yeah, I minus minus. And if fs of I is equal 1, if s of I is equal 1, then I'll just decrease the count of c1 and just decrease it the left one. The positions is found, and if L is equal to c1 and my c1 is still less than equal r, in that case I'll just see out n minus uh, n minus 1 नहीं, राइट इफ अगर मेरा लेफ्ट जो है अगर मेरा सी वन के काउंट से लाइक छोटा है बराबर है तो सी वन से राइट लेफ्ट एन माइनस आई होगा यहाँ पे एन माइनस आई एंड देन द प्रिंट नेक्स्ट लाइन प्रिंट्स आई विल जस्ट यूज रैंडल and return it, right? For the last one, for the last see out, just I'll just see out and till the handle, right? So yeah, according to me it's done. Let's try to run. Let's try to run this. What is 1104 1104? It's correct. Correct का पता तब चलेगा जब मैं इसको सबमिट करूँगा. Let's try to submit and see कि वो पता है कि oh my god, मैंने ध्यान नहीं दिया कभी इस चीज़ पर. ये क्वेश्चंस मेरे वो हैं जो मैंने सॉल्व नहीं किए. वो करेंगे इनको भी, लेकिन इनको भी करना है. किसी शीट में आ जाएंगे तो कर लेंगे, या फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो करूँगा. क्या हो गया इसको? Accepted. Yeah. See. All right. Let's move forward to the last question. Raspberries. Raspberries. Nice. Okay, you are given an array of integers and the number k. All right. Number k. ध्यान दो चीज़ पे. In the one operation, you can do the following: choose one index and the set of the equal one, and minimum number of operations you need to do. The test case of the first line of test case under two. The area of the second line test case it's guaranteed the number of ठीक है. ओ कुछ ज़्यादा बड़ी टेस्ट केस नहीं है. In the first test case we need to ठीक है क्या है इसमें 2573 इसके अकॉर्डिंग alright 2573 अच्छा चलो ये रैंडम देख लिया. ये देखते हैं 2577 इसका क्या आएगा. इसका इसका 3 आना चाहिए शायद. 3 है. सही है. Yeah, so let's start the code. C.cpp. Let's start without wasting time. I'll just I'll assign an array globally. That is the size ones because of the size things. The constraints are high for the size one. कितना 5 का लेता हूँ 5 6 and 1. अरे यार अरे नाम मेरा 5 and then just take one. Right. Let's start the logic. First I'll as rituals पहले हमको input लेना पड़ेगा. The number of test cases, rituals complete, and
I'll just use t minus minus. अलग मेथड बनाऊँ या इसी में कर दूँ? इसी में कर देते हैं, छोड़. I'll just this and just see out this thing. What CNN and K, and then just run a loop. हाँ, बहुत हैंड्स ऑन हो गए इस चीज़ से अब. लाइक ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम में ये चीज़ तो मिलती है इतना तो. ये इनपुट लो, वो इनपुट लो. कम ऑन. Now what? We have to input array of 5, array of 5, array of 5, done, and then just declare the answer thing is what? Declare the answer as a random number. We let's declare it with a 6. Then for it, int I is equal to, then again starting with the point, and I is less than equal m, and plus plus I. If not if, I'll just update the answer. Answer should be minimum, the value of which the answer comma k minus a, k minus not one नहीं, k minus array of 5, k में से हर वैल्यू को मैं घटाऊंगा array के, and not only घटाना, will the check the modulus to with the k, and इस सारे का module with the k, right? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, ट्राई रन करना तो हो जाएगा समझ में. लाइक है इजी चीज़. मैंने तो मन सामने ड्राई बिना उसके मन में ड्राई रन करके एग्जांपल का सोल्यूशन बताया था कि उसका 3 आएगा इस वाले का. ये 2577 सारे कैलकुलेशन है. लाइक इसको डीपी से भी कर सकते हैं, इसमें डीपी भी मेंशन है. ऑलराइट, करते हैं. एंड दिस थिंग हैपन. Oh, then if I'll just check the condition, if k is equal my 4, in that case I'll just check even. I'll assign that even first, and just using the next loop, int I is equal to again 1, and I is less than and plus plus I, and check even plus equal a of 5 modulo 2 is equal 0. No, I'll just check the even thing here, and in that I'll just maybe थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है ब्रैकेट्स की वजह से मेरे को. मुझे इतना ब्रैकेट्स यूज़ करने की आदत है नहीं है. So let's just, what is there? Let's just assign it here. Answer is again min, and then answer comma again. Then this time I have to choose the max one. That's 2 minus ev 2 minus ev comma 0 1 right. And this thing happen like if condition के बाहर आ गए, and then we have to see out the answer, and l it's and l double meaning हो जाएगा होगा. It's and l, right. Let's try to run this. कोई भी शॉर्ट से एग्जांपल लेके कर लेता है. 15 पे आया और अच्छी करना पड़ेगा. 1 and 2 5 7 3. It's 2. It's correct. सही होगा, ट्राई करके देखता हूँ. क्वेश्चंस टिपिकल नहीं है, लिटरली क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, लेकिन बस वही है, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि तुम कितना समझ पा रहे हो, कैसे इसको ड्राई रन कर पा रहे हो अपने मन में. लेट्स सबमिट इट. लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है. इट्स एक्सेप्टेड. इट इज. तो यहाँ पे तो रनिंग बता रहा है. एक्सेप्टेड. या सो इट्स फॉर टुडे गाइस. कल फिर से मिलते हैं, कल फिर से नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे. इनको टिक कहाँ से करते हैं, इनको टिक कहाँ से किया जाता है, आई डोंट नो. लाइक अच्छा यहाँ से होता है क्या? नॉट
कंफर्म, आई डोंट नो व्हाट दिस। रिफ्रेश करके देखो क्या आता है। इसमें अभी भी नहीं आया। ओके आ गया। या सो कल फिर से मिलते हैं, आगे के और भी क्वेश्चंस करेंगे। सो या बने रहो वीडियो में भाई, मैं सिर्फ पैटर्न्स वाले और अच्छे क्वेश्चंस ही लेके आऊँगा। आगे से तो और ज़्यादा ट्राई करूँगा। सो जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ आप साथ साथ बस वही प्रैक्टिस कर लो तो भी आपको बहुत इनफ है। इफ़ यू आर इन इंडिया तो पता है मुझे मार्केट सिचुएशन क्या कर रही है। एंड इवन आई एम इन वर्किंग इन अ टॉप कंपनी। पता नहीं मेरे को टॉप बोलूँ या नहीं, लेकिन हाँ ये लाइक अच्छी कंपनी है। तो आई नो लाइक वॉट हैपन हियर। जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ अब वही साथ साथ में कर लो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं कल फिर से।